Hello, 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 hello. डेस्कटॉप ऑडियो हम लोग एक सेकंड देखते हैं स्ट्रीम कैसे चल रही है. Oh, nice. We are live, we are live, we are live. क्या हो गया? गाइस इनका डेटा चैनल थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है. Let's see, we'll resume. भाई चलेगा. चलो एटलीस्ट ये तो देख सकते थे अब तक. अब तक कौन कौन नहीं आया ट्रैक पे? एवरीवन इज ऑन ट्रैक एक्सेप्ट बेमन जो क्रैश हुआ था. नाइस. अभी फ्लाइंग लैप कौन कर रहा है? नो वन इज डूइंग अ टाइम लैप एज ऑफ नाउ. लेट्स सी. टाइम क्यों नहीं दिखा रहे लोग? ये गलत है यार. पैसा लेगा ऐसा करना गलत है. लेट्स सी. फॉर नाउ नॉरिस इज द फास्टेस्ट. 117,671. भाई. वाओ. रसल फास्टेस्ट. Hamilton on the way to possibly go the fastest. Two green sectors, last sector maybe. Oh भाई, everyone is improving. सब improve कर रहे हैं. Hamilton fastest? No, Hamilton goes sixth fastest. 118. भाई कुछ तो गड़बड़ है इनका. क्यों हो रहा है ऐसा? डेटा ट्रैकर क्यों नहीं काम कर रहा? चलो वर्स्टैपेन का ऑनबोर्ड देखते हैं. हो सकता कॉपीराइट पड़ेगा यार उस पे अपने को. थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं शायद इसका ही डेटा. ना, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग. भाई सुनोडा सेकंड फास्टेस्ट. व्हाट द फक. लियम लॉसन क्राइंग इन द कॉर्नर.
मेरे को स्काई स्पोर्ट्स टीवी। ओ भाई, साइंस पर्पल सेक्टर फर्स्ट, सेकंड सेक्टर ग्रीन है अभी भी। माइट भी गो फास्टेस्ट, माइट भी साइंस माइट गो फास्टेस्ट। नहीं, साइंस मेरे हिसाब से साइंस गोज फास्टेस्ट अब। यस, साइंस गोज फास्टेस्ट, 117 565, वेरी 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 क्लोज टू what Norris was in FP1. Verstappen already pit. Very good. They're not happy with their car. Eventually, they'll need to make some changes in the first three practice sessions. Else, they're fucked. मैं कार्तिक को बुलाता हूँ, एक सेकंड। कार्तिक को कॉल करते हैं, देखते हैं कार्तिक आता है कि नहीं। भाई मैक्लारन क्या, ओ किसका था ये, हु वाज दिस? कार्तिक, हेलो, आ रहा क्या? ठीक है, डिस्कॉर्ड पे हूँ मैं, आना रहेगा तो आजा। लेट्स जॉइन डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड। कार्तिक भाई आ रहे हैं, कार्तिक भाई आ रहे हैं। भाई बहुत बहुत टफ कंपटीशन है इस बार। बहुत बहुत क्लोज है सब कार्स। टॉप, लुक एट टॉप सिक्स, देर आर सिक्स डिफरेंट नहीं। भाई विलियम्स इज सरप्राइजिंगली वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। मतलब ऑल्सो एल्पिन में गैजली इज वेरी फास्ट। कौन कौन पिच में है अभी भी? एवरीवन इज वर्स्टैपन, सुनोडा, स्ट्रोल, ह्यूल्केनबर्ग। ब्रो, भाई क्रेजी। हाँ, रसल भी। मर्सिडीज इज ऑल्सो वेरी फास्ट। व्हाट्स न्यू, शिप्स कॉर्नर। कौन कर रहा था इधर बकचोदी? ये चैनल पे एवरीवन, सीवी सिंह। भाई ये गिफ्ट कार्ड क्यों बांट रहा है डिस्कॉर्ड पे? ठीक है, चलो विल वेट फॉर कार्तिक। तब तक तो रेस। चलो, लेक्लैक इज डूइंग अ फ्लाइंग लैप। लेट्स सी। नॉट द फास्टेस्ट फर्स्ट सेक्टर, बट वेरी क्लोज। Around one tenth of the pace of science. So he might go third fastest, maybe. Maybe, yeah, still, but mm, Leclerc है वो। He lost some time in the third sector. उसने छोड़ दिया, he backed off. Most likely, yes, he backed off. बट भाई बहुत बहुत टफ कंपटीशन है यहाँ पे।
Williams is also performing very, very, very good. So how much teams we have in contention? Six teams, nahi? McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams. Five teams in contention. बाकी सब तो आउटलायर्स हैं. विलियम्स इज द सरप्राइज पैकेज. भाई साइंस आके कार को इतना इम्प्रूव कर सकता है, पता नहीं. कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ. ओ ओ ऑलमोस्ट गैसली ऑलमोस्ट क्रैश इन द ग्रेवल. लॉकअप, फ्रंट लॉकअप. भाई बहुत क्राउडेड है भाई अभी फिलहाल तो. एंड एवरीवन इज इम्प्रूविंग एक्सेप्ट अब ज़्यादा स्कोप है नहीं इसके बाद इम्प्रूवमेंट का. 117, वन मिड सेवेंटीज, 17 इज गुड. कल 116 में जाएगा इन क्वालिफाइंग. लेट्स सी ये डेटा अब तक अवेलेबल हुआ है नहीं. चलो नाइस, दिस इज गुड. Now you can see the timings na. 117.3 Science, 117.303 is Russell. भाई रेड बुल क्या चोक कर रहा है भाई. थैंक यू. ठीक. भाई लेक फास्टेस्ट जाएगा. भाई ये तो तोड़ देगा. ये तो हो जाएगा इसमें. 117.7, 117.0, क्लोज टू द एंड ऑफ 1.16 मे बी. मतलब सेकेंड सेक्टर उतना अच्छा नहीं गया बट मे बी थर्ड सेक्टर फाड़ दिया वापस. ना हक दिया इसने. नहीं, पता नहीं. लेट्स गो, लेट्स गो लेक, लेट्स गो, लेट्स गो भाई. 5/10 ऑफ सैंड्स. क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी क्रेजी. सॉरी गाइस, डोंट माइंड माय ईटिंग प्लीज. भाई हैमिल्टन सेकंड फास्टेस्ट. मैक्लारन को क्या हो गया. यूल्केनबर्ग की सॉबर भी गई. यूल्केनबर्ग की सॉबर भी गई. उसने शायद ग्रेवल में गया. पूरी कार खुली पड़ी है, गया उसका ये प्रैक्टिस सेशन तो.
लेक्लेर्क ने भी पिट किया, हैमिल्टन भी पिट करेगा अब। टाइम इंप्रूव करने का सही चांस था बट मे बी दिल पिट हो गया ना उनका एक एक फ्लाइंग लैप अच्छा वाला। पता नहीं, अभी तो टाइम लगेगा मोस्टली सब पूरा कार रीओपन करके फिर वापस। अभी भाई साहब आई माइट नॉट बी एबल टू शो यू गाइस कि मैं स्क्रीन पे क्या देख रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली कॉपीराइट इश्यूज। बट पूरी सौबा की पूरी गाड़ी खुली पड़ी है। सब पिटेड है मर्सिडीज और एस्टन मार्टिन दोनों बाहर है। कौन कौन है? माइट बी रसल और दोनों एस्टन मार्टिन, अलोंसो और स्ट्रोल। क्या लगता है गाइस? एवरीवन वाज सेइंग, मतलब इवन नॉरिस वाज सेइंग कि फरारी इज वेरी फास्ट, दे हैव जस्ट हिडन द पेस बिकॉज ही बेसिकली सेड कि उनका फ्यूल लोड्स और ये सब नॉरिस को पता है एंड दे आर एक्सट्रीमली ऑन वेरी गुड पेस। नॉरिस ने अनपिट किया। चलो। लॉसन का फ्लाइंग लैप गाइस। भाई कुछ कर लेगा लॉसन, भाई प्लीज कुछ कर ले, ऐसे तो नहीं होने वाला। भाई हम लोग को ड्राइवर्स चैंपियनशिप तो जीतना है एटलीस्ट। सो हक दिया भाई। वेंट वाइड एंड 4 tenths ऑफ द पेस इन फर्स्ट सेक्टर भाई। एफ डजंट मेक सेंस। हो गया अबॉर्ट कर दे भाई, लैप नहीं होने वाला तेरे से। वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, वेरी डिसअपॉइंटिंग। कर दे भाई अबॉर्ट, नहीं सेंस बनता। और किसका फ्लाइंग लैप चल रहा है? किसी और को दिखा दो भाई। फरारी भाई डेंजर। सॉफ्ट टायर्स पे बंदे ने 118 किया है भाई। लॉल। हाय गाइस, जो भी स्ट्रीम देख रहा है, सॉरी इफ आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट ऑन स्ट्रीम। बस बस, थैंक यू। हम्म हम्म। ओ भाई नाइस।
कौन इम्प्रूव कर रहा है? रसेल वेंट थर्ड फास्टेस्ट, साइंस फोर्थ हो गया, देयर इज नो 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 साइंस ऑफ मैक्लारेन। भाई बहुत टफ सीजन होने वाला है ये। अच्छा, किमी ने स्टार्ट किया अपना फ्लाइंग लैप, 3/10 of the pace after second sector from Leclerc. भाई सुनोड़ा, भाई आरबी को क्या हो गया इधर? एंड किमी ने अपना फ्लाइंग लैप खत्म किया 8/10 ऑफ द पेस ऑफ लेक्लैक। सैड ब्रो, स्टिल वेंथ नाइन्थ फास्टेस्ट ओवरऑल। भाई आरबी को क्या हो गया? आरबी इज वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। स्ट्रोल वेंट थर्ड फास्टेस्ट, व्हाट द फक, ओ माय गॉड, सुनोड़ा फास्टेस्ट। भाई 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 भाई, व्हाट द फक। पब्लिक तो पागल हो गया रहेगा भाई। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था। थोड़ा आराम से बैठ जाता हूँ भाई। ये कौन था? ओके, हैड जार मेस्ड अप। नहीं, सुनोडा ने टाइम लूज किया। ओ ओ ओ, शीश डूड, वेरी 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 वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवल में चला गया वो। भाई वर्स्टैपन का आउटलैप है, लेट्स गो। भाई वर्स्टैपन भाई फाड़ दो इनकी। सॉफ्ट टायर पे आया है, लेट्स गो। फ्लाइंग लैप आ रहा है गाइस। नॉरिस, पर्पल सेक्टर्स। ये वाला टर्न बाय टर्न डेटा है या मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये टर्न बाय टर्न डेटा है क्या? बेसिकली गिव्स यू कि व्हाट योर ट्रैक टाइमिंग्स है सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 के हिसाब से। वर्स्टैपन का फ्लाइंग लैप चालू, दिखा दे भाई टाइमिंग्स, लेट्स गो। वर्स्टैपन का ऑन बोर्ड, ग्रीन 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 ग्रीन, पर्पल, नहीं ब्रो, पर्पल। अबॉर्ट कर दिया इसने, अबॉर्ट कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, बैक्ड ऑफ। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट लैप में ट्राई करेगा। पीएसटी गोज थर्ड फास्टेस्ट। नॉरिस कहाँ है? वाई इज नॉरिस सल्किंग? ओह, ही वेंट ऑफ ट्रैक, व्हाट हैपन? भाई कार कंट्रोल में नहीं है भाई, कार स्मूथ नहीं है इनकी इतनी। ओह, आइजैक है, या नॉट श्योर व्हाट हैपेंड देयर।
Isaac Hatcher. Norris goes fastest again, bro. What the fuck? भाई कैसे कर लेता है ये बंदा? रसल का फ्लाइंग लैप चालू. वेरी बैड. Russell is so off the pace. So off the pace. 6 tenths down in the second sector. Verstappen going. इसके बाद Verstappen flying lap. अच्छा Verstappen is on a flying lap. Might be. क्या सेक्टर्स? ओके पर्पल तक तो आया. लेट्स सी. एक पर्पल आया उसके उसमें. सेकंड पर्पल. फर्स्ट टू ग्रीन सेक्टर्स है उसके. गोस 10th फास्टेस्ट. ओनली 10th फास्टेस्ट. क्या आप बात कर रहे हो? भाई हक दिया रेडबुल ने तो. रेडबुल ने तो हक दिया है भाई. मजाक चल रहा है भाई. विलियम से गंदा परफॉर्म करना इज एन आर्ट. वाल्ट्री बोटास रिजर्व ड्राइवर फॉर मर्सिडीज. सुनोडा का पूरा गाड़ी खोल रहे हैं लोग. नहीं, विंग सेटअप चेंज कर रहे हैं. रियर विंग चेंज कर रहे हैं. आइजैक हैडजर को 5th फास्टेस्ट. व्हाट्स रॉन्ग विथ रेड बुल? और एवरीथिंग्स रॉन्ग विथ रेड बुल. एवरीथिंग्स रॉन्ग विथ रेड बुल आई गेस. भाई साउबर इज फास्टर देन रेड बुल. ओ माय गॉड. कौन है ये? कौन है ये बंदा? भाई सब 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 चोक कर रहे इतने टाइम बाद आके. शायद मे बी. हाँ, ऊपर से स्ट्रीट सर्किट है पहला रेस. गैसली जस्ट सेड ऑन द रेडियो कि नो वन इज लुकिंग इन द मिरर्स. हैमिल्टन गोज 4th फास्टेस्ट. वो था ही ना पहले भी. भाई रेड बुल इज सो आउट द पेस. आई एम सो कंसर्न्ड. लेक का फ्लाइंग लैप चालू है. भाई फरारी कितनी कंट्रोल में दिख रही है पता है भाई. क्या स्मूथली कॉर्नर से निकाल रहा है लेक. वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ. He'll beat Norris. He'll go fastest overall. हाँ. Went fastest overall. Let's go. अपडेट हो भाई. हाँ नाइस. भाई so good. Leclerc so good.
वेज वर्स्टैपन 2 कूल डाउन लैप कर रहा है ये, क्यों? फ्लाइंग लैप पे कौन है? कोई नहीं, एवरीवन इज डूइंग अ कूल डाउन लैप. लॉसन क्या हगा है भाई. चल पियास्ट्री फ्लाइंग लैप कर रहा है. मैक्लारन उतनी कंट्रोल में नहीं दिख रही जितनी कंट्रोल में फरारी दिख रही थी. मतलब मैक्लारन इस थोड़ी स्टिफर साइड पे. पियास्ट्री सेकंड फास्टेस्ट. वर्स्टैपन थोड़ा धीरे जा रहा है. ही वांट्स टू बिल्ड द गैप बिफोर स्टार्टिंग द फ्लाइंग लैप मे बी. अभी भी फ्लाइंग लैप नहीं कर रहे? कर रहे हैं. वर्स्टैपन फ्लाइंग लैप कर रहा है. नहीं होना था भाई. रेडबुल चोक करेगा ये बार. पेकिंग ऑर्डर बताते हैं. फर्स्ट मैक्लारेन स्लैश रेडबुल और मैक्लारेन स्लैश फरारी. सेकंड मर्सिडीज, थर्ड विलियम्स, फोर्थ रेडबुल में बी. समथिंग लाइक दैट. बिकॉज डजंट मेक सेंस. बहुत बहुत ज़्यादा चोक कर रहा है. मतलब स्टिल वेरी अर्ली टू से, बट उनके अपग्रेड्स वर्क नहीं कर रहे टेक्निकली. रेड बुल वॉट 15 अपग्रेड्स, 15 परफॉर्मेंस अपग्रेड्स एंड 1 कूलिंग अपग्रेड इन ऑस्ट्रेलिया. एंड दिस इज आफ्टर bahrain का टेस्टिंग. बिकॉज मैक्लारेन का सिर्फ एक अपग्रेड दिखाया उन्होंने. वर्स्टैपन को 7th फास्टेस्ट बट स्टिल वेरी बैड. नहीं. यूल्किन गोज यूल्केनबर्ग गोज 8th फास्टेस्ट तो समझ लो सॉबर है. 7th रेडबुल, 8th सॉबर. समझ लो फिर क्या हालत है भाई. पता नहीं, मतलब डिपेंड करेगा. आई डोंट नो कि अभी दीज कंडीशंस आर वेरी सिमिलर टू यस टुमारोज क्वालिफाइंग सेशन. कल के क्वालिफाइंग सेशन में यही यही कंडीशंस रहेगा मोस्ट प्रोबेबली. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू जज. नहीं. इफ मतलब आई फील कि हैमिल्टन कुड गो थोड़ा ऊपर. सुनोडा विल डेफिनेटली गो डाउन. मर्सिडीज बहुत ज़्यादा नीचे है, 10th एंड 16th, जो होना नहीं चाहिए. सॉरी. अभी सब पिट कर रहे हैं ना. ओके, सुनोडा ने पिट कर दिया. और स्टैपन ने भी पिट किया. नाइस. ओ अनसेफ लॉन्च. कौन था ये? जॉर्ज. भाई आरबी को क्या हो गया? आरबी 4th और 6th. अनबिलीवेबल भाई. मशीन स्वैप कर लिए क्या दोनों ने? मतलब आई डोंट नो क्या कैसा है. स्टिल आई फील देयर इज टाइम. कल P3 तक देखते हैं. उसके बाद तो पाक फॉर्म में लग जाएगा.
ओ भाई, जैक दो, हमने अपनी गाड़ी की आई माई कर ली. प्लीज चेक द फ्लोर. आई bottomed a bit at the exit of turn 10. बाकी सब pitted है. It's only George and Sunoda out. Both are doing outlaps अभी तो. केमी भी outlap है अभी. पता नहीं ब्रो. what अभी तो वियर्ड है. अभी तो कैनॉट से कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा. स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम. who's George is on a flying lap. भाई मर्सिडीज को अपना थोड़ा लिवरी पे काम करना चाहिए भाई. डजंट लुक गुड. अभी हो गया ना, बहुत टाइम हो गया. चांद पे भी दाग तो हमेशा. यार बैठ के स्ट्रीम सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा, पता है. मतलब आई कुड ऑल्सो हैव समथिंग लाइक प्लेयर ट्रैकर. ये टाइम ट्रैकर तो है. दिस इज नॉट यूजफुल ना. आफ्टर दिस पार्ट इज नॉट यूजफुल अकॉर्डिंग टू मी. ये लास्ट दो सेक्शन वी कैन कीप दिस थिंग देयर विद अस. ये पांच इधर साइड में we can have to circuit chart team radios and then my webcam, something like that. है चांद पे भी दाग तो. hmm. Gasly starting a flying lap. हो गया 16 मिनट्स है. मोस्ट ऑफ देम ने अब तो सब बाहर आ रहे धीरे धीरे विथ न्यू टायर्स. Gasly on a flying lap. Let's go. Let's see. हक दिया उसने. भाई टू मच ऑफ द पेस. 2 seconds ऑफ द पेस. 2 seconds way too much for softer tires. नहीं हो रहा ये लैप तो गया इसका. गैसली का इज़ वेरी स्लो. अरे भाई ये लोग कितना कॉर्नरिंग कर रहे हैं. इनके फ्लोर सेम विद जैक. फ्लोर की तो लगने वाली है इनके. अबॉर्ट कर दिया गैसली ने लैप अपना. बनता भी है भाई, बनता भी है. बहुत गंदा किया था. नॉट अ परफेक्ट लैप. श्योर. फाइनल कॉर्नर में ही इज़ ऑलरेडी 3 tenths डाउन. सॉरी 3 seconds डाउन. 5 seconds ऑफ द पेस. 5.5 seconds ऑफ द पेस. अभी भी वर्स्टैपन और यूल्केनबर्ग पिट्स में. वर्स्टैपन द ड्राइवर हु स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम इन द पिट्स टुडे. सबसे ज़्यादा टाइम उसने लगाया पिट्स में. मतलब दे आर वर्किंग ऑन द कार मे बी बट डजंट लुक गुड फॉर रेड बुल.
And apparently it looks very good for RB. Sister team is performing better than the main team. नॉरिस का फ्लाइंग लैप, लेट्स गो. तो तुम लोग भी देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी दिस ट्रैकर राइट. दिस शोज बेसिकली how good sectors are they having, or how. So this, until here is first sector, this is second sector. So if it's yellow it's okay, it's not that good, but if it's green, or green stands for personal best and purple stands for uh, overall best. But अब सबका pace, Norris is also very down. अच्छा, they are doing maybe a lot, maybe they'll be doing longer fuel runs. 3 seconds of the pace of Leclerc का fastest lap. By people watching, please drop a hi, say something. कुछ तो बोलो भाइयों. Maybe they are doing higher fuel loads to test race speed थोड़ा. But seems unusual कि now पता नहीं. Same Gasly जैसा ही 6 seconds of the pace final corner में. Norris is doing, yes, Norris is doing race pace, race simulation, because he is still pushing. इसमें क्या rod suspension's quite difficult to get to, but I can see torsion bars being changed, middle sections being adjusted as well. Nothing much going on the rear, but Max Verstappen still not happy with this car. Over one lap, missing the time, trading the practice time on heavier fuel for making a change to the front suspension and then seeing how that goes. And that really sort of underlines what they've been thinking about with this car, the MO of running this Red Bull RB21 through testing, and indeed today, the first day of track running. But yeah, let's see. They've got to get the setup right. It doesn't matter if they miss a bit of running time. They've just got to get the setup right. They're still chasing it. But yeah, you certainly wouldn't bet against Max in the rain if we're expecting that on Sunday, would you? Correct. There are rain possibilities on Sunday. What will you do if it rains? I don't understand. Gives you opportunities. There is only opportunities a to limited overtake, as he thing proved Max in Sao can also Paulo, do going from when it rains. 17th on the grid to winning. Brazil was a But different story, because still got to Brazil go was out there and get a decent extreme qualifying. rain. You don't want to be low down the order and having to fight your way through. So it's proper experiments that the teams are going to be बार-बार repeat थोड़ी कर सकता है वो. Only Verstappen and Beerman in the pit. Verstappen working on his suspension, Beerman because of his crash. Was on the soft when he did Get on the track today. Sainz on the medium, Albon on the soft. On the performance runs. So you reckon there's probably about another 6-7 tenths? Well, that's what other people were finding, wasn't it? Yeah. It was somewhere around the half-second mark. So maybe 4-5 tenths. Because don't forget, we've got the softest of the range here, the 3-4-5. The gap between the 4 and the 5 isn't as much as you'd have otherwise. So, but people were finding sort of 4-5 tenths on the step. But I've just been watching, Crofty, the race runs here, and you know, most people, the quick ones down in the low 122s, Liam Lawson a 24.2 and then a 23.8. And you compare that with Lando Norris last time around, a 121.9. Bro. Kimi Antonelli a 22.1. Carlos Sainz a 22.1. George Russell 22.2. Lawson over a second and a bit away from the race pace we're seeing from the Mercedes and the McLarens. You've got to give all rookies time. And I believe Lawson is in the rookie camp. Yes, I agree. He has never driven this track before. It's the first time he's been. He's had 11 races in Formula One, so I'll stick him in the rookie camp. Even with 11 races of previous experience, Red Bull are going to say to him, look,
will make allowances, but not that many allowances. You've got to get your lap times up a little bit. That's if he starts doing it again tomorrow. But Today what is a happened? learning day. And What happened? No points for practice. Yeah. Dawson is not. It's a learning day, able but to perform. he needs to learn from We this. replace him with And get Yuki, that much or closer we tomorrow. find Yeah, an alternative exactly option that. outside As him long as he's able to make the or progress for outside their camp. tomorrow, that's fine. But What seems as to a be driver, legitimate honestly, option. psychologically, Obviously, you'd still rather go to bed on a promoting is Friday one of the night options, but knowing that does it make sense? He you're has in the not been- ballpark. he has been good, In but terms not of pace, in exceptional terms of setup, when it comes to it'll give you performing in confidence to RBS. sleep well at night. And Or- when you look at the timesheet, 17.6 for him versus a 17.0, you know, 6/10 the gap to came your out of the teammate. pits, but let's see. That's not comfortable reading, if I'm it's honest. not. Yuki Tsunoda has just been on the radio saying that the rears feel worse than before, and we've just seen Isaac Hadja just rear lock up going into to turn 3. I'd be fascinated to see in a dry qualifying tomorrow how the Racing Bulls go, because they've looked good in FP1, they've looked good in FP2. Are they running, you know, a higher engine mode? Are they doing some testing for the big team in terms of, you know, again, first race of the year? Are they doing some tests in terms of higher engine modes? Because that's unusual, right? To see both Racing Bulls ahead of both Red Bulls. Exactly what I was thinking. Particularly Max Very- Verstappen. So, yeah, Very unusual interesting to to see how it carries on into both qualifying. RBs ahead of both Red Bulls. Which will Sister come teams your perform way better than the tomorrow main after team. one final practice session. As we watch Kimi Antonelli on his latest run. That was his last lap time. Which engine is So Racing we'll Bulls compare using? this one RB with कौन सा that. engine use कर रहा है? Any idea? That's the gaps between George Russell and Kimi Red Antonelli Bull on power their unit best there. laps. He crosses the line now. Kimi Antonelli just put in a Karoo. 21.9, which is matched by Lando Norris at 21.9. So, By Kimi yeah, is also very George fast. Russell at 21.7. So, Russell a couple tenths quicker, but he's on slightly fresher tyres to Norris at this stage. Third youngest driver to start a Grand Prix after Max Verstappen and Lance Stroll. That will be Kimi Antonelli's claim to fame on Sunday. He has got 3 Grand Prix this season, the first 3 of the season, to सबसे try कम and become laps the अभी youngest तक ever के race लिए winner. Verstappen के हुए हैं He's 14. 18 years and Rest 203 everyone is days 20, old 23 on laps. race day. And of course was in F2 here last year where he got a front row start back in 2024. It's such a tall order for rookies of the calendar, because of course China is a sprint weekend as well, isn't it? Yes, it is. So, you know, we've only got one practice session before we have to get on with it. And again, a tough track, long radius corners. I don't know if Antonelli's been there actually, because F2 don't race there, and I don't know if he might have gone testing with a TPC program. We can It's ask. a proper tyre shredder. Is It's that just track. the front left. I find it a very frustrating track to drive because just waiting. By the way, Kimi Antonelli, born on the 29th of August 2006, a day you remember well, because it was the same day Sebastian Vettel made his first ever free practice with the flying appearance lap. at a Grand Prix Wow. weekend. 2006 Turkish Grand Prix for BMW Sauber, the day Kimi Antonelli was born. Amazing. How time Longer race flies. run. But I mean, wasn't Oscar Piastri born when Fernando Alonso made his debut? He was born after Fernando had made his Race debut runs कर in रहा the है. same RB city. will Yeah, be- but within like a couple of weeks, wasn't Yeah, it? it was less than a month between them. Yeah. It's not the youngest field we've ever had in Formula One, but I think, off memory, it's the first time we've had 4 drivers feature on the grid under the age of 21 in World Championship history. Nice. It's not Yeah. the youngest Rookie field because season you've still है got Fernando Alonso and Lewis Hamilton that are just Destroying the Red Bull average. भी destroying ठीक लग रही है average मतलब age a little bit. doesn't look Actually, as it's a big stiff gap, as isn't it? McLaren, There's two but of them. McLaren Then you've probably got apparently what, being Carlos stiff Sainz is somewhere still in better. his, what, 33, 32, Low speed 33? corners का problem दिख रहा है He's 30. Red Bull. He's 30, yeah. I'm telling you, said that. There you go. Sorry. And Nico Hulkenberg is probably 37, I'm going to guess. He's 37. Yeah. So, yeah, I mean, but again, there's sort of big gaps further down, isn't it? So, But that's actually one of the dynamics I'm looking forward to this season, where you've got elder, experienced drivers up against the rookies. And it doesn't surprise me. You know, Pierre Gasly say that people have not been looking in their mirrors. It's a bit crazy out there. I think we're going to get a bit of that whilst the younger, less experienced drivers dial themselves in. Oh, But when lock it up comes to Russell का racing, lock up
you know, who gets their elbows Oh out? my fucking good. The older, experienced, भाई wise उसने वो old मारा foxes क्या or मारते हैं, the क्या बोलते हैं उसको? the youngsters. As George Russell, at the second time Donut. today, George Russell has gone straight on at a corner. It was turn 4 in FP1, and it's turn 13 now, and he's done it with a lockup. Yeah, just snatched the inside front, and I think he'll be slow enough that he'll get away with a flat spot. Look at those ducks. Are they ducks? Yeah, See they that? thought they were safe, and then George Yeah. Russell, the duck destroyer, came round the corner. Oh, he's getting his helmet on, Ollie Behrman. Ooh, भाई 4 4 मिनट के लिए minutes बेमन to ट्रैक go. पे आएगा क्या? Well, if nothing else, he'll be able to get out for a practice start. Maybe. I don't know where our roving expert Teddy K is down in the pit lane. Teddy K. Well, Save that for the Miami Grand Prix. It's very American. can I test it before that? Go. You can. What can I do for Karun? Teddy K. Yes, what can I do for you, gents? Ollie Behrman, he's Well, putting his helmet on. I know, I got it wrong. I got it wrong by 4 minutes, didn't I? I said they'd be doing well if they got him out with 7 or 8 minutes to go, and so I'm wrong by 4 minutes. Well, But it is worth getting out, as you say, yeah. if only just to justify all the hard work from the mechanics, who have gone without any kind of lunch, has been cancelled, and yeah, they've been. It would be worth it just to go out, just to get a feel for the car, check it's all okay. Clearly the day begins, the Australian Grand Prix begins on Saturday morning for Ollie Behrman. Not the greatest preparation, but as we say, if it is going to be wet, then there's always, you know, points to play for on Sunday. But yeah, it looks like it would be a shame for the mechanics' work not to be rewarded with actually getting out on track. Even Yeah, if it is everyone only is doing longer runs. Yeah, starts What is tomorrow, their but he big will time? have Friday on my mind syndrome. I Leclerc think. का क्या है Can section? he find a 17. cure to that when he gets out on the track? Charles Leclerc right behind very Max close. Verstappen with a DRS Sector 2 open. में Is Verstappen he going to is have a little time. lunge down into turn 10? Turn 10? 11. 11, sorry. He thought about it, Yeah. and I'm sure Max saw him coming. It's like, mate, you're not coming past me. By the way, I bumped into someone the other day, said that her granddaughter describes the Ferrari car number 16 as Charlie Red. I quite like Charlie Red. Charlie Red. Yes. Okay. If we're going Teddy K, we might go Charlie Maybe. Red. Have we worked out what Bono is going to be saying to Kimi Antonelli yet? And Get what, a shift on. and what is Ricardo Adami going to say to Lewis Hamilton? Because he said he wasn't going to carry hammer time over. Really? Yeah, I think Ted asked him that during testing. Yeah, He said he was going to come up with something new. Hammer time is here to stay, sure. You can't mess around. Well, I don't know. It's nothing to do with me. Can't mess I'm around just with passing me. on the information. Right, 2 minutes So and a bit Verstappen to is go. doing good in longer If that run, car but comes out, not I as would be good as Amazed. in awe and also a little Everyone. surprised. They're Piastri going to try and is put doing him in great. there just to try and make sure. Norris Piastri दोनों अच्छा कर रहे हैं भाई. I mean, this is 3 good tenths practice for the of crew pace. to see how quickly they can get things done. 3 tenths It's of the not the pace sort of thing you Verstappen simulate in necessarily. longer simulation. During the course of a season. Car number 87 we haven't seen on the track this afternoon. First time and only the second time we've seen car number 87 on a track in Formula One World Championship history. Yves Giraud Cabantol, or Cabantao I should say. 1951 German Grand Prix. भाई You know all Lawson about क्या it. कर रहा है? don't you? Nobody knows. Nobody knows. Neither do I. It's only the second time in F1 history we've had car number 87. Good stat. So, Fernando Alonso and Aston Martin's off these. So, Alonso 13th, Stroll 9th on the performance runs. But less than a tenth between them. Yeah. And it was interesting listening to Andy Cowell speaking to our guys after the FP1, and very much saying that this year is about learning and progressing. It's not about necessarily the end results of this year. It's about creating the structures they need for the future. So already sort of downplaying expectations, it seems. Which haven't been Catch up helped there. by the fact they expected Piastri Enrique so fast? Cardile to Yeah. be in his post as your chief Why technical is man back at the Piastri factory. That's not so- now going to so happen fast? until July, although I think the legal argument still continues on that one.
but there was like a two-pronged pillar, wasn't there? There was Enrique, and then there was Mike Crack at the track. Decent ring to it. Feeding up to Andy Cowell as the team principal and CEO. So that structure has changed around a little bit now. I think Aston Martin unpicking the last 2 years where they've gone steadily backwards, seemingly with every upgrade that's appeared at the track. Checkered flag. Has Ollie Bearman made it, Ted Kravitz? I'm sorry to say he has not. Do you know what, Crofty? A couple of minutes they would have made it. Yeah. 120 seconds they would have made it. The tyres were about to go on, the car was about to be lowered down. Just so close, so close. Bad luck, guys, bad luck, boys, bad luck, girls. Great effort, but yeah, another 2 minutes and they would have been out. They would have made it. Nice. Thanks ever so much, Ted. Oscar Piastri finishes as second fastest in this session. You've been looking at the race runs a little bit, Karun. How were his lap times? He was right in there. You know, he was down in the high 21s, low 22s, but yeah, we'll just wait to see. You know, I think Ferrari went for another set of tyres there towards the end. Leclerc doing 20.8, Hamilton at 21.2. So again, that sort of 4/10 gap between them. Lando Norris, third fastest, a couple of hundredths of a second behind his teammate Oscar Piastri. Nothing to choose between the two McLaren drivers. Out in front, Charles Leclerc. It's Ferrari fastest as they were in 2024. Leclerc had a 1:17.2 in FP2. Everyone is making practice runs अभी तो 3 का वॉचिंग आ रहा है भाइयों, बात तो कर लो कोई. कुछ नहीं, everyone is doing practice runs. I guess we are done for the session. We are done for the session. So let's see. I'll reload एक बार, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं. चलो, मतलब for now तो I guess we are done for the session. ये इंटरनेशनल क्या है मेरे को वो देखना था, समझ में नहीं आ रहा है. और international live stream उनकी. Speed traps. So we're still guessing. I asked you at the start, is it time to stop guessing? No. I'm not sure. Let the guessing continue. We'll come back with some more answers tomorrow, and I'm sure you'll come back to find the answers as well. Because we've only had one day of the 268 days between FP1 and FP2 here in Albert Park and the checkered flag in Abu Dhabi. We've got a lot of time to talk F1 for the year, and I hope you stay with us. Charles Leclerc fastest from Piastri, Norris, Tsunoda and Hamilton. Our Racing Bull's pace confirmed by Hadjar being in the top 6 as well. Max Verstappen, understeer problems in that Red Bull. Hulkenberg right up there for Sauber. Lance Stroll squeezed into the top 9. George Russell 10th fastest, but there are a lot of drivers, a couple of tenths between themselves. Verstappen down to Doohan, separated by only 2 tenths. Ollie Bearman, after the crash in FP1, didn't get out. Lost a heap of time. How crucial will that be when we come back for qualifying tomorrow? We'll find out, and I hope you can join us. Hope you enjoy this. We'll switch to some different window. इनका ये ट्रैकर इतना मिस्टेक क्यों है भाई? ठीक है, थैंक यू सो मच. Hopefully very soon. We'll see you tomorrow most probably in qualifying session. Hopefully Red Bull does good. Hopefully McLaren is so off the face that they get crashed. Just kidding. I want to see Ferrari. देखो मेरे लिए ऑर्डर होना चाहिए फर्स्ट ऑलवेज मैक्स, सेकंड लेक्लैक, थर्ड पियास्ट्री, फोर्थ हैमिल्टन, फिफ्थ
Norris, 6th Russell, if that makes sense. Chalo. Thank you so much. Have a good day. Bye bye, guys.